Here actually there are two different type of blood clotting mechanism. One is extrinsic pathway, another is intrinsic pathway. हम यहाँ पे तीन चार स्टेप्स में डिस्कशन करेंगे. स्टेप वन. Formation of prothrombin activator or thrombokinase. Formation of prothrombin activator or thrombokinase. Thrombokinase is the enzyme which will initiate the process of blood clotting mechanism. ये है स्टेप वन. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. You know, there are two different type of bleeding. That is externally injury होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं external injury, और that is extrinsic pathway. And internally अगर injury होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं intrinsic pathway. So both extrinsic pathway and intrinsic pathway. तो पहले extrinsic देखते हैं, राइट साइड में intrinsic भी देखेंगे. Extrinsic pathway and this is intrinsic pathway. Extrinsic pathway for external injury and intrinsic pathway for internal injury. Both cases में extrinsic pathway में क्या होगा ना tissue will damage or damage tissue. ठीक है ना, टिश्यू क्या होगा यहाँ पे ना डैमेज होगा. एंड इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड वेसल डैमेज होगा. Blood vessel will be damaged in the intrinsic pathway. Now the important is what? The damaged tissue produces tissue thromboplastin. Because thromboplastin actually दो टाइप का है. The thromboplastin which is synthesized or secreted by the damaged tissue is called as tissue thromboplastin, whereas the thromboplastin which is secreted by the damaged blood vessels is called as platelet thromboplastin. ठीक है, तो दो टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया for both the external pathway and intrinsic pathway, or for the external injury and for the internal injury. कॉमन क्या है दोनों में? थ्रोम्बोप्लास्टिन. मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन ही अल्टीमेट है जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को क्लॉटिंग मैकेनिज्म. बोथ रिजल्ट्स इन both the thromboplastin, either it is tissue thromboplastin or platelet thromboplastin, will form thrombokinase. Who form the thrombokinase enzyme? Thrombokinase enzyme कौन फॉर्म करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन. एंड इसी थ्रोम्बोकाइनेज को हम लोग क्या बोलते हैं ना? prothrombin activator. Why is it? Now because thrombokinase is responsible for the activation of what? ना prothrombin into thrombin. जो prothrombin को thrombin में convert करेगा आप उसको क्या बोलेंगे? prothrombin activator. क्या बोलेंगे उसको? prothrombin activator.
And which enzyme is activating the prothrombin into thrombin? ना thrombokinase, so called as prothrombin activator. समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप. क्या मैंने लिखाया था? स्टेप 1 क्या मैंने लिखाया था? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम. समझ में आ गया? अभी आते हैं स्टेप नंबर 2 में. स्टेप 2, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा इनटू थ्रोम्बिन. हियर तो पिछले क्लास में पढ़े थे प्रोथ्रोम्बिन सिक्रेटेड बाय इंपॉर्टेंट लीवर. याद है? That prothrombin will be converted into thrombin in presence of the thrombokinase. And here calcium ion also responsible. And calcium ion कौन सा फैक्टर था? फैक्टर नंबर 4. याद है? मैंने आपको जो फैक्टर लिखाया था 12 factors are associated with the blood clotting mechanism. So which is the factor number 4? Calcium ions. लिखा था ना? तो यहाँ पे देखो calcium ion factor number 4 भी essential है for the conversion of prothrombin into thrombin. Step 3. That is conversion of fibrinogen into fibrin. Conversion of fibrinogen into fibrin. Fibrinogen actually soluble protein. Fibrinogen is a soluble protein synthesized by the liver again, and that fibrinogen will be converted into fibrin in presence of what? Na thrombin. देखो आप, एक स्टेप होगा तो वो दूसरे स्टेप को फैसिलिटेट करेगा, दूसरा स्टेप रेडी होगा तो वो तीसरे स्टेप को फैसिलिटेट करेगा और कैरी ऑन करेगा. तो अगर एक स्टेप बंद हो जाएगा तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स द स्टेप विल आल्सो स्टॉप्स, राइट? एंड इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं ना? कैस्केड मैकेनिज्म. क्या बोलते हैं उसको? कैस्केड मैकेनिज्म. कैस्केड मैकेनिज्म आप लोग 11 में पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर में, एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे एंजाइम और हार्मोन कैसे एक्टिवेट करते हैं. A will activate B, B will activate C, C will activate D. This method is called as what? Cascade mechanism. तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि नहीं? कैस्केड मैकेनिज्म. And here the fibrin will be insoluble. तो soluble हो गया किसमें? Insoluble. Now this fibrin will be changed into fibrin thread. बात को समझिए, ये इंडिविजुअल फिब्रिन, इंडिविजुअल फिब्रिन. तो ये मोनोमर हुआ कि पॉलीमर हुआ? These are monomer. These are the individual monomer fibrin protein in presence of an enzyme called as, sorry, in presence of a factor. अब देखिए मैंने जो प्रीवियस क्लास में लिखाया था उसमें फैक्टर नंबर 13 क्या था? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. याद आया? तो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 will stabilize the monomer into polymer. So this process is a polymerization. Because of the polymerization of the monomer fibrin, that will change into polymer. And इसी polymer को हम लोग क्या बोलते हैं ना? fibrin thread. अब ऐसे मोनोमर जो फिब्रिन है
वो पॉलीमराइज होके ऐसे थ्रेड में फॉर्म कन्वर्ट होगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारा थ्रेड बन जाएगा। किसका थ्रेड है ये, फिब्रिन थ्रेड। क्लियर है। अब देखिए, दिस इज द एरिया विच इज गेट डैमेज्ड, ये है डैमेज्ड एरिया और डैमेज्ड पार्ट। क्योंकि ये डैमेज हुआ है तो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे बना क्या है, फिब्रिन थ्रेड बन गया है, एंड दीज फिब्रिन थ्रेड will arranged in this damaged area or exposed area। जो एरिया एक्सपोज हुआ है, जो एरिया डैमेज हुआ है, उसी डैमेज्ड एरिया में ये जो फिब्रिन थ्रेड है ये ऐसे पूरा अरेंज हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो ये 100% हम बोल सकते हैं मेस लाइक अरेंजमेंट हुआ कि नहीं, मेस वर्क बन गया। once the meshwork will form, now the bleeding will stop। अब ब्लीडिंग होगा क्योंकि फिब्रिन थ्रेड तो पूरा कवर कर दिया है ना डैमेज्ड पार्ट को, एक्सपोज पार्ट को जहां से ब्लीडिंग हो रहा था, तो ब्लीडिंग अभी हो गया स्टॉप। लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप मतलब क्या है, नो आरबीसी कैन कम आउट, नो प्लेटलेट विल कम आउट, क्योंकि ये पूरा जाली जैसे कर दिया, मेसवर्क टाइप का कर दिया है। तो ब्लड सेल विल कम्स और ब्लड विल अनेबल टू कम, ब्लड सेल्स अनेबल टू कम, लेकिन फ्लूइड तो बाहर निकल सकता है ना, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज व्हाट, सीरम। क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरम, serum will comes out and that serum is equal to plasma minus clotting factor, plasma minus clotting factor, प्लाज्मा माइनस क्लटिंग फैक्टर और क्लटिंग प्रोटीन। तो आपको सीरम को क्या बोलेंगे, प्रोटीन प्रेजेंट है कि प्रोटीन एब्सेंट है सीरम में, सीरम में प्रोटीन एब्सेंट है, तो सीरम क्या क्लॉट होगा, will not clot, because सीरम क्या है, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, क्योंकि ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबी से प्लेटलेट बाहर निकलना बंद हो गया, लेकिन जो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा आफ्टर सम टाइम, द पेल कलर फ्लूइड विल बी डिस्चार्ज्ड आउट, इज कॉल्ड एज सीरम, and serum will never clot because it is plasma without clotting factor or without clotting protein। आपको समझ में आ गया कि नहीं, this is the mechanism of blood coagulation। Now here that is anticoagulant। उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के। हम लोग शायद पढ़े थे डाइजेशन चैप्टर में कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, राइट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द विटामिन के इन द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्या है, it is essential for the formation of prothrombin। Prothrombin, which is to be formed in the liver in presence of which vitamin? Vitamin K. Vitamin K is essential for the formation of prothrombin, and that is why absence of the vitamin K, the blood is not properly clotted। क्योंकि prothrombin नहीं होगा तो thrombin नहीं बनेगा, thrombin नहीं बनेगा तो fibrin नहीं बनेगा, है ना। कंप्लीट है क्या, सबका फिनिश्ड हो गया, नेक्स्ट पेज में मूव करें। चलिए, now what are the different type of blood anticoagulants are there?
लोग थोड़ा बहुत एंटीकोगुलेंट के बारे में जानते हैं. There are actually two different type of anticoagulants are there. Anticoagulant means what? Another factor or the agent which will prevent the blood clotting is called as anticoagulant. एक होता है natural, दूसरा है synthetic. और केमिकल. ब्लड बैंक में जो यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है? ब्लड बैंक में जो पाउच में ब्लड स्टोर करके रखते हैं ना, वो क्लॉटेड फॉर्म में है कि अनक्लॉटेड फॉर्म में है? अनक्लॉटेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में. अगर क्लट हो गया तो ये जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड क्लटिंग? द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड टू गेट कन्वर्ट फ्रॉम द लिक्विड टू जेल स्टेट. मींस ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए वहां पे कुछ एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है, एंड दैट एंटीकोगुलेंट इज केमिकल और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल. सो नेचुरल एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल क्या है ना? एक तो हम लोग जानते हैं हेपारिन. Heparin secreted from the mast cell as well as from the basophil cells. So which blood WBC act as mast cell? Basophil. Basophil act as a mast cells by secreting both heparin, histamine, serotonin. तो हेपारिन हो गया. बाकी आप लोग पढ़ेंगे कि लीच के सलाइवा में भी एक टाइप का एंटीकोगुलेंट है. आप लोग कभी सोचे कि लीच किसी एनिमल को बहुत ही कंटिन्यूअसली ब्लड कैसे सक कर लेता है? लॉन्ग टाइम के लिए, 1-1 घंटे के लिए वो ब्लड सक करता है कि नहीं? क्योंकि ब्लड तुरंत क्लॉट हो जाएगा. अगर इंजुरी होगा तो तुरंत क्लॉट हो जाएगा फ्यू मिनट्स के अंदर. बट हाउ द लीच इज एबल टू कंज्यूम द ब्लड फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड? वहां पे ब्लड क्लट क्यों नहीं होता है? क्योंकि लीच के सलाइवा में भी एक एंटीकोगुलेंट है जो क्लटिंग को प्रिवेंट करता है. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू सक द ब्लड फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरोडीन. इसलिए साइंटिफिक नेम ऑफ लीच का क्या? यूरोडिनारिया ग्रैनुलोसा, उसी से हुआ है यूरोडीन. एंड और एक है दैट इज कॉल्ड एज वार्फरिन. वार्फरिन ये प्लांट का एक केमिकल है, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है. सिंथेटिक फॉर्म में सोडियम ऑक्सैलेट, सोडियम साइट्रेट एंड EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, आप चाहे तो लिख सकते हैं फुल फॉर्म. एंड एक्चुअली ऑल दीज are used in blood bank, used in blood bank as base binds कैल्शियम आयंस. देखिए बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है बच्चों. ये जो सोडियम ऑक्सैलेट, सोडियम साइट्रेट एंड EDTA है, ये करता क्या है? हाउ इट इज एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट, क्योंकि ये कैल्शियम को बाइंड कर लेता है. भाई कैल्शियम इज वन ऑफ द फैक्टर नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लटिंग. फैक्टर नंबर 4, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा क्या ब्लड क्लट हो सकता है? नहीं होगा. इसीलिए डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी दैट विल आल्सो अफेक्ट द ब्लड क्लटिंग मैकेनिज्म. एंड ये सारे के सारे केमिकल क्या करते हैं ना? ब्लड में जो कैल्शियम है उसको बाइंड कर लेते हैं. कैल्शियम एब्सेंस से ब्लड क्लट होगा क्या? नहीं होगा. and that is why they act as anticoagulant. समझ में आया कि नहीं? and those chemicals which are binding the calciums are called as chelating agents. तो यहाँ पे सोडियम ऑक्सैलेट, सोडियम साइट्रेट, EDTA ये सारे के सारे क्या है ना? chelating agents by means of binding the calcium to prevent the blood clotting mechanism. किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए. इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड,
तो आपकी बॉडी में तो कैल्शियम होता ही ना। फॉर्म क्या होगा, आपकी बॉडी में 6.8 लीटर ब्लड है और आपकी बॉडी में 200 ml ब्लड आएगा तो क्या दिक्कत होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है क्या? ये जितना मैं लिख रहा हूँ ना, आप लोग को याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्लट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट क्लट। लिखा है था लिस्ट। ये जरूरी है। तो ब्लड क्या होगा ना, क्लट होगा नॉर्मली। देखो क्लट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, सिंपल मैकेनिज्म है, वेदर द क्लटिंग प्रोटीन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। If the clotting protein or factor will be present, then it is clot, and if it is absent, will not clot. अगर कम होगा तो स्लो क्लट होगा, ज्यादा होगा तो नॉर्मल क्लट होगा। तो भाई ब्लड में तो प्रेजेंट होता है, so that will clot, and प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, so that will clot. इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड में लेस अमाउंट होता है, लेस अमाउंट होता है, तो इसीलिए क्या होगा, स्लो क्लट होगा। एंड द सेम इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हेन इट इज एंटर इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम will called as lymph। तो इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन एंड lymph का कंपोजिशन सेम है, हम कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इसीलिए स्लोली क्लट। serum will not clot। menstrual blood which is occurs in the female, that is will not clot because menstrual blood already clot हो चुका है, वो clotted blood फिर से dissolve होता है, इसीलिए once the clotted blood will dissolve will not again clot। and semen in case of male will clot, इसमें लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो सीमेन को क्लट किया जा सकता है। So we are coming to the next topic, lymph and lymphatic system। स्टार्ट करें। lymph and lymphatic system। So what is lymph and what is lymphatic system? देखिए आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ब्लड के बारे में पढ़े थे, लिम्फ के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, वहां पे मैंने बोला था कि we will discuss about the lymphatic system with discussion elaborately in the circulation chapter। तो मैं आपको पहले लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बिफोर दैट we'll go for the diagram first। Supposed to be
supposed to be this is the heart. तो डायरेक्शन देते हैं, this is from the heart and this is to the heart. ठीक है, तो the blood vessels which will comes from the heart, क्या बोलेंगे उसको, artery or vein. Blood vessel which is to the heart will be called as vein. मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दिया ताकि आपको समझने में और इजी हो जाए. This is actually artery which is from the heart. And artery का branches को हम लोग क्या बोलते हैं, arteriole. Branches of artery is called as what? Arteriole. Arteriole further branch करेगा called as capillary. Now capillary rejoin to form what? The venule. And venule rejoin to form and vein is to the heart. तो आपका जो ब्लड है, क्या ये ब्लड वेसल्स के बाहर निकला या हार्ट से निकला, हार्ट में पहुंचा बाय मींस ऑफ द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. क्लोज्ड ब्लड वेसल है कि नहीं? एंड दैट इज व्हाई द सर्कुलेशन इन केस ऑफ हायर एनिमल्स इज क्लोज सर्कुलेशन की ओपन सर्कुलेशन. क्लोज का मतलब यही है. The blood is always confined within the closed chamber, and that closed chamber is called as what? ना blood vessels. हार्ट से निकला, हार्ट में रीच किया. समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. कैपिलरी में क्या है ना, कैपिलरी में बहुत सारा छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट है. Small pores are present in the capillary, and these are called as capillary pores. These are called as what? ना capillary pores. जहां कैपिलरी प्रेजेंट है, with the same area, जहां कैपिलरी प्रेजेंट होगा, सेम एरिया में आपका lymph vessels and lymphatic capillary also present. ये जो मैंने आपको डायग्राम किया, ये एक्चुअली है क्या? दिस इज lymph vessels and this is lymph capillary. एंड आप देख सकते हैं लिम्फ कैपिलरी क्या है, ओपन एंड है कि क्लोज्ड एंड है? क्लोज्ड. दिख रहा है आपको? लिम्फ कैपिलरी क्या है, क्लोज्ड एंड है कि ओपन एंड है? क्लोज्ड एंड. लेकिन ब्लड कैपिलरी देखिए, ओपन एंड है कि क्लोज्ड एंड है? ओपन एंड है. ये डिफरेंस है कि ब्लड कैपिलरी आर ओपन एंड बट लिम्फ कैपिलरी व्हाट? क्लोज्ड एंड. नाउ व्हाट विल बी हैपेंड, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. ब्लड कैपिलरी में जो पोर प्रेजेंट है, उसी पोर के थ्रू ब्लड का जो लिक्विड पार्ट, ब्लड का जो स्मॉलर पार्ट, ब्लड का जो सिंपल पार्ट है, वो उसी कैपिलरी के थ्रू बाहर निकलेगा. तो डिपॉजिट कहां पे डिपॉजिट हुआ? ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है, सिंपल पार्ट है, सेल्युबल पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, वो बाहर निकला कैपिलरी पोर के थ्रू. कहां पे आके डिपॉजिट हुआ? स्पेस में डिपॉजिट हुआ कि नहीं? एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस. क्या बोलते हैं उसको? एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड. क्या बोलते हैं उसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड
जिसको हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। नाउ दिस इज द एरिया वेयर द सेल्स आर प्रेजेंट। यहीं पे सेल, बॉडी का सेल्स यहीं पे प्रेजेंट। कुछ दिमाग लगा रहा है कि नहीं आप लोग? सेल और सेल के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, filled with the fluid called as what, interstitial fluid। yes or no? तो ब्लड एंड सेल के बीच में क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? ब्लड एंड बॉडी सेल के बीच में क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? नो, बिकॉज द ब्लड इज confined within the blood vessels. So how do the exchange takes place between the blood and body cells? How do? जिनके केस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, हर चीज में एक ही बार बोलूंगा। जिनके केस में क्लोज सर्कुलेशन है, how do the exchange of the substances between the blood and body cells will occur? Now there must be a need of middleman. There must be a need of what? Middleman. अगर बॉडी सेल के साथ डायरेक्टली ब्लड अगर कम्युनिकेट करता तो क्या मिडलमैन की जरूरत था? यहाँ पे तो क्लोज। तो in which case the blood is in direct contact with the body cell, ना open circulation। लेकिन हमारा क्या है, close circulation। तो we need what? Middleman। and which is act as a middleman? Interstitial fluid or tissue fluid। तो interstitial fluid or tissue fluid act as middleman। and middleman का काम क्या होगा? दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना। and the exchange takes place between the body cells and blood to be communicated through the middleman, the interstitial fluid। yes or no? and यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरी में एंट्री करता है, क्या बोलेंगे हम उसको? लिम्फ। इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन एंड लिम्फ का कंपोजिशन क्या है? सेम। खाली लोकेशन के हिसाब से उसका नाम अलग अलग है। when the fluid is present in the interstitial space, called as interstitial fluid। when that is enter into the lymphatic capillary and lymphatic vessels, called as lymph। इसीलिए दोनों का मिनरल कंपोजिशन सिमिलर होगा कि डिफरेंट होगा? सिमिलर। तो लिम्फ कैपिलरी विथ लिम्फ। इसीलिए लिम्फ को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मिडलमैन। एक्चुअल मिडलमैन कौन है? एक्चुअल मिडलमैन कौन है? टिश्यू फ्लूइड। क्योंकि मिडलमैन टिश्यू फ्लूइड सेम लिम्फ है, इसलिए लिम्फ को भी मिडलमैन बोलते हैं। आप लोग कहीं पे भी देखेंगे तो लिम्फ लिखा होगा मिडलमैन, पढ़े ना आप लोग? लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा कि हु एक्चुअली एक्ट एज द मिडलमैन, ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो आप सोचेंगे अगर ब्लड से हर चीज निकल जाए, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के थ्रू अगर ब्लड का लिक्विड पार्ट निकल जाएगा जो लिम्फ में कन्वर्ट होता है, तो ब्लड का क्वांटिटी कम हो जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा। दिमाग में आना चाहिए सब चीज। अगर ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड पार्ट बाहर निकल जाता है, इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, then must be the blood quantity will decrease, must be the blood pressure will decrease, the body will be affected, the person will be affected। then how do the blood quantity managed? How do the blood quantity become restored again? Means this tissue fluid, this lymph, again by means of the passage pathway, they again come to blood। ब्लड से निकलता है, फिर लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू कहां पे रीच करेगा? फिर से ब्लड में ऐड हो जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? अभी आपको समझ में आ रहा होगा लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? द रिटर्निंग ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू ब्लड। What is the main function of the lymphatic system? The returning the interstitial fluid again back to blood। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी पर्सन को आप ब्लड डोनेट करने के लिए बोलेंगे 100 ml 200 ml whatever, तो ब्लड का क्वांटिटी कम नहीं होगा, क्या होगा उसका? नॉर्मल रहेगा। आफ्टर गिविंग द ब्लड, सपोज टू बी 5 लीटर ब्लड है या 6 लीटर ब्लड है, 2 ml ब्लड दे दिया तो उसके बॉडी में उतना ही ब्लड था जितना है अभी भी उतना ही है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर से आ जाएगा ब्लड में।
तो ब्लड का क्वांटिटी फिर से क्या होगा ना, रिटेन हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्लड क्वांटिटी कभी कम नहीं होता है। आई होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया हो। कंप्लीट है क्या? This interstitial fluid this interstitial fluid is collected and drained back to the major vein, drained back to the major vein by an elaborate network of lymphatic vessels called lymphatic system. हम लोग अभी lymphatic system डिस्कशन करेंगे। Lymphatic system comprises of 4 different parts. क्या क्या है 4 पार्ट? पहले तो lymphatic capillary हो गया, ठीक है। Lymphatic capillary rejoin to form what? The lymphatic vessels. Lymphatic vessel rejoin to form lymphatic duct, and the fourth is lymphatic nodes or lymph nodes. तो 4 कंपोनेंट हो गया lymphatic system का, lymphatic capillary, lymphatic vessels, lymphatic duct and lymph nodes. And lymphatic duct दो टाइप का है, एक है right lymphatic duct, second is thoracic duct. तो राइट लिम्फेटिक डक्ट का लोकेशन राइट पार्ट में है, राइट साइड में है, एंड थोरेसिक डक्ट का लोकेशन लेफ्ट साइड में है। एंड ये दोनों ही मेजर लिम्फेटिक डक्ट है प्रेजेंट में। ये दोनों मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करूंगा। तो आपको मैं डायग्रामेटिकली शो कर दूंगा कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन कैसे इंटरलिंक्ड है। कंप्लीट है क्या? फिनिश्ड? चलिए हम लोग नेक्स्ट पे। सो वी हैव a diagram for this lymphatic system. Supposed to be, this is a schematic representation of the body of a human being.
So we need to go for the different type of lymphatic system are present in the body. Now, मैं ऐसे खाली रफली कर रहा हूँ. स्टैटिस्टिकली डायग्राम हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए. तो here in this particular diagram, ये हो गया आपका राइट पार्ट. दिस इज एक्चुअली द लेफ्ट पार्ट. मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ ना, तो ये क्या हो गया राइट पार्ट. दिस इज व्हाट ना लेफ्ट पार्ट. एज ऑलरेडी टोल्ड कि दो टाइप का lymphatic duct present है. This is called as right lymphatic duct. The right lymphatic duct is present in the right side, and this is thoracic duct, and that is present in the left side. And याद रखिए thoracic duct डाउन मतलब नीचे से ऊपर ला रहा है लिम्फ को या ऊपर से नीचे ला रहा है लिम्फ को. So a thoracic duct is carrying the lymph collected from the lower side. Yes or no? And right lymphatic duct is collecting or carrying the lymph collected from upside. ऊपर में जो लिम्फ है उसको कैरी कौन कर रहा है ना राइट लिम्फेटिक डक्ट. नीचे जो लिम्फ है वो उसको कौन कैरी कर रहा है ना थोरैसिक डक्ट. है कि नहीं. नाउ
This is called as the jugular vein. And jugular vein यहाँ पे मैं खाली डायग्राम में है बोल के मेंशन कर दिया. Jugular vein is the vein which is come from head. क्योंकि ये vein है तो क्या होगा, to the होगा कि from the होगा? From the organ to the heart. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ from head. From head समझ में आया कि नहीं? This is right subclavian vein. सबक्लेवियन मतलब ये आर्म से रिलेटेड है. तो राइट आर्म से जो भेद आता है उसका नाम क्या है? राइट सबक्लेवियन भेद. एंड वैसे ही लेफ्ट से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट सबक्लेवियन भेद. फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म. सो राइट आर्म से लेफ्ट आर्म से देखो दो सबक्लेवियन भेद आ गया. दिखाई दे रहा है कि नहीं? एंड आप देख सकते हैं थोरैसिक डक्ट जाके किस में ड्रेन कर रहा है? राइट सबक्लेवियन में कि लेफ्ट सबक्लेवियन में? कहां पे? थोरैसिक डक्ट जाके कहां पे एंड हो रहा है? देखिए तो लेफ्ट सबक्लेवियन में एंड हो रहा है कि नहीं? एंड थोरैसिक डक्ट में क्या प्रेजेंट है? लिम्फ प्रेजेंट है कि ब्लड प्रेजेंट है? लेकिन वेन में क्या प्रेजेंट है? तो आप देख सकते हैं लिम्फ जाके किस में ड्रेन हुआ? ब्लड में ड्रेन हुआ कि नहीं? Same to same, right lymphatic duct, they also drain the lymph into what? Right subclavian vein. So thoracic duct will drain the lymph into left subclavian vein, whereas right lymphatic duct will drain the lymph into right subclavian vein. And left subclavian, right subclavian मिलके क्या बनाते हैं? Togetherly called as what? Na superior vena. सुपीरियर वेने का बाद कहां पे ओपन हो रहा है? हार्ट में ओपन होगा कि नहीं? रहेगी नहीं. तो आप क्या बोले थे? हम लोग क्या बोले थे कि ब्लड से लिम्फ बना था, वही लिम्फ जाके अल्टीमेटली फिर से कहां पे ड्रेन हो गया? ब्लड में. तो ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन इंटरलिंक्ड है कि नहीं? एंड द डायलेक्टेड पार्ट where from the thoracic duct is being started is called as cisterna chyli. So it is the marked dilation where the thoracic duct begin is called as cisterna chyli. And these are the lymph nodes. Lymph node actually 3 to 4 different types. This is called as inguinal lymph node. तो inguinal lymph node का लोकेशन क्या है? ग्रोइन. ग्रोइन मतलब क्या है ना, दो पैर के बीच में जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोइन. समझ में आया कि नहीं? सो ग्रोइन पार्ट में जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है उसका नाम क्या है ना? इंग्विनल लिम्फ नोड. द लिम्फ नोड व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हम लोग पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना? पेयर्स पैचेस. याद है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना? मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स. This is mesenteric lymph nodes and it is present in the, that is small intestine or intestine. You can just write intestine. The lymph node which is present in the armpit is called as axillary lymph node. So axillary lymph node का location है armpit. And the lymph node which is present in the neck area is called as cervical lymph node. Neck. देखो मैंने आपको पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम पूरा समझाया. तो मैंने आपको बताया था ना कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज आता है? लिम्फेटिक कैपिलरी. एंड लिम्फेटिक कैपिलरी यहाँ पे कौन सा है?
तो ये जो बाकी जो बच गया ये सब क्या है? ये सब क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी है कि नहीं? Lymphatic capillary to form the lymph vessels. These are the lymph vessels. Lymph vessel together to form lymph duct, and lymphatic duct will drain back the lymph into blood by end into the large vein. जो डेफिनेशन मैंने लिखाया था लिम्फेटिक सिस्टम का, क्या लिखाया था ना? fluid is collected and drained back to the major vein by the elaborate network of the lymphatic vessel called as lymphatic system. दिखाया था ना? भी समझ में आ गया सबको? कंप्लीट है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। फिनिश है, मूव करें आगे। ये जानो तो लिखिए फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नंबर 1, lymph transport, oxygen, nutrient, hormone, etc. ये क्या होगा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन टू दी सेल होगा कि फ्रॉम दी सेल होगा? एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल क्या होगा? भाई यूजफुल मटेरियल होगा तो टू दी होगा, अगर वेस्ट होगा तो ये दोनों एक्सचेंज कौन कराएगा? ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? लिम्फ कराएगा कि नहीं? तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एटसेट्रा टू द सेल एंड carbon dioxide and other metabolic waste from the cell. Point number 2, lymph node produces lymphocyte. Lymph node produces lymphocyte. Number 3, lymph transports lymphocyte, antibodies,
to the blood. Number 4, lymphocyte destroys the microbes and other foreign particles. And number 5, it absorbs the lymph, sorry, fat, पढ़े थे ना, lacteals, पढ़े थे from intestine, पढ़े थे कि नहीं? Yes, sir. So lacteals में क्या present था? Lymph present था. The lacteals which contains the lymph that will absorb the fat from the intestine. So as you can see, the functions of the lymphatic system, the primary functions क्या दिखा आपको? Immunity में इसका रोल है कि नहीं? रोल है कि नहीं? एंड आपकी बॉडी में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री करते हैं वो डायरेक्टली एंट्री कहाँ पे करते हैं? ब्लड में एंट्री करते हैं. और ब्लड अगर प्यूरिफाई नहीं होगा, ब्लड अगर फिल्टर नहीं होगा, तो ब्लड तो हो जाएगा टॉक्सिक. ब्लड में तो माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया वगैरह तो सब प्रेजेंट रहेंगे. फैगोसाइट कैसे होगा? इसीलिए ब्लड को फिल्टर करना जरूरी है. एंड फिल्टर कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम. And when the blood is passing through the lymphatic system in the form of lymph, तो lymph में जो भी microorganism present होंगे वो सब क्या हो जाएगा ना? When they're passing through the lymph nodes, they will kill them, क्योंकि lymphocyte form produced by lymph nodes. समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही important point है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है. भाई होप आप लोग को समझ में आया होगा lymphatic system, right? So we are coming to the circulatory pathway. Coming to the circulatory pathway. Circulatory pathways. मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने इजीली आ जाए. This is the auricle. This is the ventricle. This is conus arteriosus. This is sinus venosus. This is actually the diagram of. This is actually the diagram of fish. Two-chambered heart. This is the heart of a fish, which is two-chambered heart. One auricle, one ventricle. Two-chambered हो गया. Additional structure present क्या है? Sinus venosus and conus arteriosus. अभी देखिए. This is the body part. तो बॉडी से जब ब्लड रिटर्न आएगा वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी विल बी एंटर इनटू व्हाट? किसमें एंट्री किया? अरे किसमें एंट्री किया? साइनस वेनोसस में एंट्री किया कि नहीं? तो साइनस वेनोसस इज रिसीविंग द डीऑक्सी ब्लड और ऑक्सी ब्लड? Deoxy blood. ठीक है. Now this deoxy blood is passes from sinus venous to auricle, auricle to ventricle, ventricle से वही deoxygenated blood, देखिए वही deoxy blood ventricle से conus arteriosus के थ्रू कहां पे ये रीच किया? किसको सप्लाई किया? ना to the what? ना gills.
गिल से जब रिटर्न करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सी होगा कि डीऑक्सी होगा? ऑक्सी ब्लड हो गया कि नहीं? एंड दैट ऑक्सीडेटेड ब्लड विल सप्लाई टू द बॉडी पार्ट डायरेक्टली। ये सिंगल सर्कुलेशन है कि डबल सर्कुलेशन है? सिंगल एंड डबल में डिफरेंस क्या है ना, तो देखिए बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, टू सप्लाई, ध्यान से सुनिए, टू सप्लाई once to the body, to supply once to the body, blood passes once through the heart, is called as single. And to supply once to the body, if the blood passes twice through the heart, then it is called as double. तो यहाँ पे एक बार बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड कितने बार हार्ट के थ्रू सर्कुलेट किया? वंस. So it is single circulation or double circulation? Single circulation. And this type of heart is called as venous heart. Why it is called as venous heart? Only deoxy blood passes. Only deoxygenated blood passes through the heart. That is why it is called as venous heart. तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि फिश के केस में कैसे ये सर्कुलेट होता है, राइट? समझ में आया कि नहीं भाई? मेहनत करके पढ़ा रहे हैं आप लोग, अगर कम से कम बोलेंगे कि नहीं हाँ भाई समझ में आ रहा है, तो मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? Now we are coming to the amphibian's heart. Amphibians का क्या है? Three chambered heart. Let's see. This is ventricle. This is a right auricle, and this is left auricle. This is truncus arteriosus. देखो फिश में होता है कोनस arteriosus, amphibians में होता है truncus arteriosus, and this is sinus venosus. From the different part of the body, from the different part of the body, deoxygenated blood एंट्री किया साइनस वेनस को, साइनस वेनस के थ्रू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहां पे आया? वेंट्रिकल. तो ये डीऑक्सी ब्लड है कि ऑक्सी ब्लड है? डीऑक्सी ब्लड. So deoxygenated blood is passing from the different body parts to the right auricle through the sinus venous, then to the ventricle. Now at the same time, lungs. At the same time the lungs. क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडल्ट फ्रॉग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो एडल्ट फ्रॉग में क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है कि नहीं? थ्रू द लंग्स, राइट? तो लंग्स से जो ब्लड रिटर्न आएगा वो किसके थ्रू आता है ना? लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू आता है. इट इज डीऑक्सीजनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड. दिखाई दे रहा है कि नहीं? And that oxygenated blood from the left auricle again come to the ventricle. तो ventricle में
कौन सा ब्लड होगा? मिक्स ब्लड। क्या होगा? मिक्स ब्लड, क्योंकि डीऑक्सी एंड ऑक्सी वेंट्रिकल में मिक्स हो गया। नाउ दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड passes from ventricle through the, किसके थ्रू पास किया? ट्रंकस आर्टेरियोसिस, है कि नहीं? टू बॉडी एज वेल एज लंग्स। तो बॉडी एंड लंग्स को जो ब्लड सप्लाई होता है वो कौन सा ब्लड सप्लाई होता है? मिक्स ब्लड। अरे समझे कि नहीं? तो बॉडी को भी मिक्स ब्लड सप्लाई होगा, लंग्स को भी मिक्स ब्लड सप्लाई होगा, एंड लंग्स से वो प्योरीफाई होके लेफ्ट ऑरिकल में एंट्री करेगा, एंड बॉडी से रिटर्न करके डीऑक्सीनेटेड होके रिटर्न करेगा। सो दिस इज इन केस ऑफ एम्फीबियंस, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। This is incomplete double circulation. Incomplete double circulation. कंप्लीट है? जल्दी। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पेज में, बाकी बचा रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का, है ना? सर आर्टेरियोसस और वेनोसस का क्या मतलब है? क्या हुआ? सर आर्टेरियोसस और वेनोसस का क्या मतलब है? कोनस आर्टेरियोसस एंड, और किसके बारे में पूछ रहे हो? वेनोसिस। हाँ सर। ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस दो अलग अलग चीज है। ये एम्फीबियंस के केस में होता है, फ्रॉग टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है। मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल, अभी के लिए इतना ही याद रखो, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जल्दी जल्दी बनाइए डायग्राम। ये रेप्टाइल का हार्ट का स्ट्रक्चर है। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। एज यू कैन सी इट इज इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, है ना? इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड। दिस इज साइनस वेनसस। वेनस का मतलब ऑलवेज रिमेंबर द ब्लड व्हिच इज deoxy blood is to be collected through the venuses,
एंड मैमल्स के केस में ये साइनस वेनस पूरा क्या हुआ है ना, लॉस हो गया है, मतलब डीजेनरेट हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है, मर्ज हो गया है। मैमल्स में दिखाएंगे हम ह्यूमन बीइंग में। दिस इज पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? ये पेयर्ड सिस्टेमिक आउटर और आर्च। ये याद रखिए कि रेप्टाइल में पेयर्ड आउटर होता है, लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है सिंगल। हम लोग का सिंगल आउटर है कि डबल आउटर है? हम लोग का अनपेयर्ड है, सिंगल है। लेकिन इन केस ऑफ रेप्टाइल इट इज व्हाट ना, पेयर्ड। ये डिफरेंस है। एंड दिस वन इज pulmonary artery. So from the body part, बॉडी से ब्लड जो एंट्री किया थ्रू द साइनस वेनसेस, दैट ब्लड इज व्हाट, डीऑक्सी ब्लड। एंड वो डीऑक्सी ब्लड आके राइट वेंट्रिकल में रीच किया। लाइकवाइज फ्रॉम द lungs, the oxygenated blood enter into the left auricle and that is reaching the left ventricle. It is oxy blood. तो फिर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि ये इनकम्प्लीट पार्टीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स ब्लड होगा कि नहीं? मिक्स ब्लड हो गया। नाउ दिस मिक्स ब्लड इज passes through the pulmonary artery to the paired systemic aorta both। तीनों के थ्रू मिक्स ब्लड पास करेगा। एंड दैट पल्मोनरी aorta का जो ब्लड है वो कैसे है, कहाँ पे जाएगा ना, लंग्स को जाएगा। एंड ये जो पेयर्ड सिस्टमिक आर्च है, इसका ब्लड कहाँ पे जा रहा है ना, बॉडी पार्ट्स। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ कि सॉरी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? कंप्लीट विल बी occurs only when the ventricle will be fully separate। एंड यहाँ पे तो इनकम्प्लीट सेपरेशन है ना। So it is 3.5 chamber। Incomplete double circulation। Incomplete double circulation। And the last is in case of human beings, sorry, mammals and birds, this is the right auricle, this is left auricle, this is right ventricle, this is left ventricle। This is aorta and this is pulmonary artery। From the different body part, the deoxygenated blood will enter to the different type of vein, superior vena cava and inferior vena cava। And right auricle से right ventricle आ जाएगा। So this is actually deoxy blood। So this same deoxy blood is also reaching the right ventricle। So right ventricle में इसीलिए deoxy blood होगा। And from the
lungs, from the lungs, it is the blood called as oxygenated, which is enter into the left auricle. It is the left ventricle. So here it is oxy blood. So इसीलिए left ventricle में oxy blood है. So there is no mixing of the blood in the right and left ventricle, as because the left and right ventricle is completely separated by means of a what? Septum, called as auricular, interventricular septum. समझ में आ रहा है कि नहीं? And now this deoxygenated blood passes through the lungs, sorry, passes through the pulmonary artery to supply to the lungs, and this oxygenated blood passes through the aorta to body. यहाँ पे क्या हुआ? To supply once to the body, the blood is passes twice through the heart. Is called as what? Double circulation. Here it is in case of birds, crocodile, and mammals. पढ़े है ना? वे crocodile का full chamber है. Crocodile although is a reptile, लेकिन crocodile का full chamber है. Crocodile में होता है, alligators में भी होता है full chamber. So birds, crocodile, and mammals. So this is called as what? Systemic heart or venous heart. क्या बोलेंगे उसको? Systemic heart. And systemic heart भी exactly कौन सा? Right part को systemic बोलेंगे कि left part को systemic बोलेंगे? किसको बोलेंगे? Left part में oxygenated है कि deoxygenated है? And left part को ही हम लोग बोलते हैं systemic. Exactly बोला जाएगा तो left part is called as systemic. And और क्या है? Complete double circulation. This is all about the circulatory pathway. Clear है? So we will start the human heart. मैं खाली थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आज. कंप्लीट है क्या सबका? यस और नो? जल्दी 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 जल्दी. आगे चले. Gives the heading human heart. पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. Then we will go for the internal structure. Externally, the heart is with actually pre-sulcus or fissure. And मैंने आपको बताया था sulcus और fissure का मतलब क्या है ना? फोल्डिंग है कि नहीं? And folding जो है वो external रहेगा कि internal रहेगा? External. That is why sulcus or fissure word is applicable to externally only, whereas septum will be applicable to internal. इसीलिए मैंने वो क्या बोला? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा. अगर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होगा तो एक्सटर्नली होगा. तो एक्सटर्नली 3 sulcus are fissure there. Number 1, inter auricular sulcus. Number 2, interventricular sulcus. Number 3, atrioventricular sulcus.
कॉर्नरी sulcus। देखिए इसको समझना बहुत इजी है। मान लेते हैं ये दो ऑरिकल है एंड ये दो वेंट्रिकल। ये क्या है? द राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। दो ऑरिकल के बीच में, दो ऑरिकल के बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है, आप इसको क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर सल्कस। तो वेंट्रिकल के बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है, आप क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड द सल्कस व्हिच इज प्रेजेंट in between the auricle and ventricle, that sulcus will be called as what? Atrioventricular sulcus। समझ में आया कि नहीं? अब आपको बताना है कि which is longitudinal and which is transverse। भाई डायग्राम में ही दिख रहा है भाई, दो longitudinal है, इंटर ऑरिकुलर एंड इंटर वेंट्रिकुलर। whereas atrioventricular or coronary sulcus is transverse। याद रहेगा? हमारा जो हार्ट है वो लेवोकार्डिया है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया है? मतलब लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? लेफ्ट साइड में है। एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स एंड उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मेडियास्टिनम। याद करिए, क्या बोलते हैं उसको? mediastinal space or mediastinum in between the lungs, slightly towards left, and that is because there is a notch developed called as what? Na cardiac notch, and that cardiac notch is the position leads to the levocardia। कभी कभी ह्यूमन हार्ट जो है वो स्लाइटली राइट साइड में भी शिफ्ट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट? ना डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो पोजीशन ऑफ द हार्ट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? एसिमेट्रिक होता है, किसी में डेक्स्ट्रो तो किसी में सॉरी लेवो मैक्सिमम, एंड कभी कभी डेक्स्ट्रो हो जाता है। समझ में आया? नाउ द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो वॉल है, वी कैन से एक्सटर्नली टू इंटरनल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। क्या होगा एक्सटर्नल टू इंटरनल? हार्ट का पूरा बाहर कौन सा लेयर है? वॉल है। एंड इनर क्या है? पेरिकार्डियम फॉलोड बाय, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? एक्सटर्नल टू इंटरनल की इंटरनल टू एक्सटर्नल? क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो पूरा आउटसाइड क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद क्या आ जाएगा ना? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद क्या आ जाएगा ना? एंडोकार्डियम। अब पॉइंट ये है कि पेरिकार्डियम में दो है, एक है इनर पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज व्हाट? विसरल। एंड जो आउटर हो गया दैट इज पैराइटल। समझे कि नहीं? तो विसरल पेरिकार्डियम क्या हो जाएगा ना? इनर, एंड पैराइटल क्या हो जाएगा ना? आउटर। ये दोनों है पेरिकार्डियम का, दो टाइप और दो पार्ट है। ये दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यस,
in between these two called pericardial space or cavity with pericardial fluid. पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा, जैसे लंग्स में था ना प्लूरल फ्लूइड, वैसे यहाँ पे पेरिकार्डियम भी पेरिकार्डियल फ्लूइड सीक्रेट करता है, दैट इज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन एंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन सो दैट जो हार्ट का जो रिदमिक पंपिंग है वो नॉन स्टॉप चले। लुब्रिकेशन से क्या होगा, इजी हो जाता है। एंड हम लोग पढ़े थे कि पेरिकार्डियम, हम लोग क्लियरली पढ़े थे पेरिकार्डियम हिस्टोलॉजिकली मेड अप ऑफ व्हाट, याद करिए, फटाफट याद करिए, सिट कनेक्टिव टिश्यू, याद आया? सिट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? डेंस रेगुलर की डेंस इरेगुलर? सिट डेंस रेगुलर। Histologically, pericardium is made up of dense regular connective tissue. Myocardium is made up of cardiac muscles, याद आया? Whereas endocardium is made up of epithelial tissue. यहाँ पे मैंने आपको हिस्टोलॉजी की तरह से समझा दिया कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे। तो हार्ट में देखिए कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, एपिथेलियल टिश्यू भी है एंड हार्ट को नर्वस टिश्यू भी सप्लाई हुआ है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था टिश्यू चैप्टर में कि हार्ट इज मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू, तो आंसर क्या होगा? ऑल। नॉट ओनली हार्ट, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज सप्लाइड विद और प्रेजेंस विद और विद ऑल टाइप ऑफ टिश्यू। कंप्लीट है? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम करके एक्सप्लेन करेंगे।